अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एमडी बायोलॉजिकल कोर्स के साथ मैं महमूद रहमान। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने स्टार्ट लिया था बायोलॉजी से, बायोलॉजी की डिफिनीशन हमने देखी थी, उसकी मेजर डिवीजन्स हमने देखी थी। आज हम टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट लेते हैं कि बायोलॉजी की सब ब्रांचेस कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हमारे पास है सबसे पहले एक ब्रांच है। मॉर्फोलॉजी मॉर्फ मीन एक्सटर्नल एंड लॉजी मीन स्टडी। मॉर्फ एक्सटर्नल एंड लॉजी मीन to study or to thoughts. So morphology is the branch of biology which deal with the study of that part of organism which is external, यानी animals and plants की जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल शेप्स एंड स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में जो स्टडी हम करते हैं वो हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। सो morphology is the study of the external structure of animals and plant and microorganism, compactly living things is known as morphology. सेकंड नंबर पर हमारे पास है एनाटॉमी। Anatomy is the branch of biology which deal with the study of internal structure of organisms. For example, heart. Heart is an organ inside living things. So, heart, the study of heart, the shape of heart, the functioning, the study of heart, द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो हम स्टडी करते हैं वो हम एनाटॉमी में स्टडी करेंगे फिर। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एनाटॉमी। थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या है? थर्ड नंबर पर हमारे पास है हिस्टोलॉजी। So, hist mean tissues and logy means to study to thoughts. So, it is the branch of biology which deal with the study of the tissues of living things and their activities occurring in them and their functions. The study of tissues, their functions and activity occurring in that tissues is known as histology. So we can simply define this. It is the branch of biology which deal with the study of tissues, their functions and activity occurring in that tissues is known as histology. नंबर 4 पे हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? फिज़िकल से मुराद है जो हमारा फिज़िकल स्टेट है उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं। सो फिजियोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स की जो सिस्टम है उसकी फंक्शंस जो हैं उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्टमक ऑफ एन ह्यूमन बीइंग परफॉर्म सेवरल फंक्शंस। व्हाट आर देयर फंक्शंस? how they can perform their functions.
all of those we study in physiology of biology. So it is the branch of biology in which we study the physical structure, the physical functions and the physical state of internal organs of living things is known as physiology. So it is the fourth branch of biology. फिफ्थ नंबर पर हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी. ये थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ. नंबर फिफ्थ, embryology. So as we can see that the name indicates that embryo. So it is the branch of biology which deal with the study of the formation of embryo, the development of embryo and so other many processes occurring in embryonic stage is known as embryology. वो स्टडी जो हम एम्ब्रियो के बारे में करते हैं, एम्ब्रियो किस तरह बनता है, एम्ब्रियो की फिर डेवलपमेंट किस तरह होती है, किस तरह वो डेवलप हो जाता है, एडवांस्ड हो जाता है, वो सारी स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं. सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो and the development of embryo and processes occurring in embryonic development is known as embryology. So this is enough for today. So the summary of today's lecture is we have studied 5 branches of biology. First number, morphology. Number second, anatomy. Number third, histology. And number fourth, physiology. Number fifth, embryology. So in today's lecture we studied these 5 branches of biology. In the next lecture we will proceed next. Other so many branches have left, so we will study in the next class. So that's enough for today. Thank you.